So on the basis of design and construction, the substation are classified into four types: indoor type substation, outdoor type substation, pole mounted type substation, and the foundation substation. So here we see the picture of the outdoor type substation and the indoor type substation. In the indoor type substation, the apparatus is installed within the substation building. सबस्टेशन बिल्डिंग के अंदर में ऑल जितने भी सबस्टेशन के इक्विपमेंट है वो आपके इंस्टॉल रहते हैं, बिकॉज इट इज द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मीन्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबस्टेशन इकोनॉमिक होना चाहिए, कम से कम खर्च में होना चाहिए, इसलिए जो सबस्टेशन के जो इक्विपमेंट रहते हैं ये बिल्डिंग के अंदर में आपका इंस्टॉल रहते हैं। सेकेंड, सच सबस्टेशन आर यूजुअली फॉर वोल्टेजेस अप टू 11 किलो। ठीक है, 11 किलो वोल्ट तक का जो है आपका जो सबस्टेशन रहेगा वो का ये यूज होता है किसमें, इंडोर टाइप सबस्टेशन। बट वी कैन इरेक्ट इट इज फॉर द 33 केवी एंड 66 केवी। कब ये 33 और 66 केवी के लिए इरेक्ट कर सकते हैं, व्हेन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज कंटेमिनेटेड विद द इम्प्योरिटी सच एज मेटल, क्लोराइड गैसेस, फंस एंड कंडक्टिव डस्ट। जब आपका एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटी रहेगी, मेटल क्लोराइडेड गैसेस रहेंगे, फॉर्म्स रहेंगे, कंडक्टिव डक्ट रहेंगे, डस्ट रहेंगे, एट दैट कंडीशन वी कैन यूज द इंडोर टाइप सबस्टेशन अप टू 33 केवी एंड 66 केवी। ठीक है, मीन्स ये जो सबस्टेशन है ये जनरली किसके लिए यूज होता है, इट इज फॉर द 11 केवी, बट if the atmosphere condition is not proper at that time, this substation we can use for up to the 33 kV and the 66 kV. ठीक, next is the outdoor type substation. ठीक है, outdoor type substation, this is for the voltage beyond 66 kV. जब voltage का range above 66 kV हो जाएगा, at that time we can use the outdoor type substation. The equipment is invariably installed outdoor. मीन्स जो भी इक्विपमेंट आपके सबस्टेशन में रहेंगे वो कहाँ पे रहते हैं, वो सब आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, आउटडोर रहते हैं, मीन्स बिल्डिंग के अंदर में नहीं रहेंगे। इट इज बिकॉज फॉर सच वोल्टेज द क्लियरेंस बिटवीन द कंडक्टर and the space required for switches, circuit breaker and other equipment becomes so great that is it is not economical to install the substation equipment out. Means जब वोल्टेज का रेंज अबोव 66 केवी हो जाएगा, एट दैट टाइम जो आपको स्पेस लगती है इक्विपमेंट के बीच में, या क्लियरेंस लगता है किसके बीच में, सर्किट ब्रेकर के बीच में, स्विचेस के बीच में और अदर दूसरे जो इक्विपमेंट यूज करते हैं सबस्टेशन में, उनके बीच में जो आपको स्पेस प्रोवाइड करने की, क्यों, बिकॉज द वोल्टेज रेंज इज इंक्रीजेस अबोव 66। so at that time it is not possible to use this in a indoor substation. At that time this substation you can use as a outdoor type, means जितने भी आपके इक्विपमेंट है ये इंस्टॉल होंगे कहाँ पे, आउटडोर में। ठीक है, नेक्स्ट इज द पोल माउंटेड सबस्टेशन। पोल माउंटेड सबस्टेशन, दिस इज द पोल माउंटेड सबस्टेशन, मीन्स यहाँ पे पोल आपके रहते हैं, दिस इज वन पोल, दिस इज सेकेंड पोल, और दोनों के बीच में ये एक आपका चैनल रहता है, इस चैनल पे आपका सबस्टेशन आपका इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो जो 11 केवी लाइन आती है ये आपके इस इंसुलेटर पे आती है, एंड दैट दिस 11 केवी लाइन गोज टू दिस ट्रांसफार्मर incoming voltage of this transformer is 11 kV and outgoing voltage of this transformer is 400 volt. So this is the 400 volt line. The line is R, Y, B and neutral, means आपके 3 फेज और एक न्यूट्रल रहता है। मीन्स जो प्राइमरी साइड ऑफ द पोल माउंटेड सबस्टेशन में कितने रहते हैं, R, Y, B, 3 लाइन्स आर देयर, बट द आउटगोइंग साइड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज 4 point, the 3 phases and 1 neutral point. ठीक है, this is the pole mounted substation. Here it is the schematic diagram of the pole mounted substation. Initially the 11 kV line is running on the pole, and here is the lightning arrestor. Lightning arrestor, why we use the lightning arrestor, because we protect our system from the lightning. ठीक है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सबस्टेशन को क्या पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, जो इनिशियली यहाँ पे कनेक्टेड है एट द अपर साइड ऑफ द पोल। देन वी यूज द फ्यूजेस। हियर
the fuses are used. Means after 11 kV, first 11 kV कहाँ पे connect रहती है? This is for the fuses for protection purpose. Then we use the isolator. This is the isolator. This is the isolator. Means if the fault is coming at that time, we can isolate the healthy faulty section from the healthy section. This is the isolator. So directly we cannot use the isolator. We can use the isolator by using circuit breaker. Means the initially when the fault is coming, then circuit breaker is closed, circuit breaker is open, and after opening of the circuit breaker, this isolator is open. Okay. So isolator is here, and then here is the oil circuit breaker. OCB means the oil circuit breaker. So initially when the fault is in the system, at that time this breaker trips. When this breaker is stripped, we can isolate this section by using this isolating switches. Okay, this is the pole mounted substation. There is a different types of construction of the pole mounted substation. So the pole mounted substation, such substation are outdoor type substation. This type का ये substation outdoor type substation and erected for the distribution of the power in the locality. और लोकेलिटी में जहाँ पे कंज्यूमर्स को पावर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एट दैट हियर वी कैन यूज द पोल माउंटेड सबस्टेशन. आपने देखा होगा आपके जो स्ट्रीट में है, आप जहाँ पे रहते हैं, जो भी विलेज में, टाउन में, वहाँ पे जो आपकी स्ट्रीट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, वो कैसा है? पोल माउंटेड, पोल के ऊपर इरेक्टेड है. तो इक्विपमेंट इंस्टॉल ओवर एंड सिंगल पोल और एच पोल, एच टाइप और 4 पोल कंस्ट्रक्शन. मीन्स जो आपका ये कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है? सिंगल पोल पे भी रहता है. बहुत जगह देखा होगा आपके विलेजेस में एक पोल है, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है. कभी कभी वहाँ पे एच टाइप का कंस्ट्रक्शन. दिस इज द एच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. एंड सेम दिस इज द 4 पोल कंस्ट्रक्शन. 4 पोल में क्या रहता है आपका? सेम ये एक आपके 2 पोल है, इसी के बैक साइड में आपके 2 पोल इरेक्टेड रहते हैं. मीन्स आप ट्रांसफार्मर कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में आपको 4 पोल में इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके. So the rating of that transformer is the 25 kV, 63 kVA, 100 kVA, 125 kVA and above 125 kVA. This is the rating of transformer. जो distribution transformer आप pole mounted substation में use करते हैं, उसकी rating कितना रहता है? Minimum कितनी रहती है? It is 25 kV and maximum above 25 up to 250 kV तक का आप transformer pole mounted substation में आप install कर सकते हैं. ठीक है. तो मिनिमम जो आपके स्ट्रीट में दिखता है वो 63 केवीए और 100 केवीए तक का ट्रांसफार्मर्स में यूज किया जाता है. above that rating we can somewhere we use where the load is very high. Means the capacity of load is very high and it is not possible to install the another substation. That time we can use this substation up to 250 kVA. So next is the foundation mounted substation. जब आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग अबव 250 kVA हो जाता है, मीन्स फॉर द ट्रांसफार्मर ऑफ द कैपेसिटी अबव 250 kVA द ट्रांसफार्मर आर टू हेवी. हैवी हो जाता है ट्रांसफार्मर. किसके वजह से हो जाता है हैवी? बिकॉज वी कैन यूज द इन द ट्रांसफार्मर ऑयल वी कैन यूज. ठीक है. ड्यू टू दैट कैपेसिटी इज वेरी हाई अबव 250 kVA, द ऑयल रिक्वायरमेंट फॉर दैट ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई. तो आपका ऑयल का क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ती है. ड्यू टू large amount of oil, the weight of the transformer will increase. So at that time we can use the foundation type transformer. जो भी आपने substation देखा होगा 33 by 11 kV या 132 by 66 kV, वो सारे substation में आपने क्या देखा होगा कि भाई वहाँ पे एक particular foundation रहता है. foundation के ऊपर वो transformer आपका install किया जाता है, जिससे क्या रहता है कि वो जो weight रहता है वो weight वो foundation bear कर सके. ठीक है. Then the foundation mounted substation are installed. Such substation are usually for above 33 kV. Means 33 by 11 kV, 132 by 33, 132 by 66 kV या 66 by 11 kV. ये जितने भी अबो रेटिंग वाले सबस्टेशन है वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? फाउंडेशन ट्रांसफार्मर. एंड बिलो 250 kV we can use the pole mounted substation. ठीक है. So this is the pole mounted substation. Okay. So pole mounted substation, it is the distribution substation placed over a pole. ठीक है. पोल के ऊपर आपका ये सबस्टेशन इंस्टॉल रहता है. इट इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द सबस्टेशन. सबसे चीपेस्ट फॉर्म कौन सा है? सिंगल पोल के ऊपर आपका ट्रांसफार्मर इरेक्ट करना.
as it does not involve any building work. कोई भी बिल्डिंग आपको अलग से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, so it is a cheapest form of the substation. The transformer and other equipment are mounted on the H-type pole or 4-pole structure. जितने भी आपके इक्विपमेंट है जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, फ्यूजेस हो गए, वो कहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं? एच टाइप में कंस्ट्रक्शन में या 4-पोल स्ट्रक्चर में आपका इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। The 11 kV line is connected to the transformer. आपकी 11 kV लाइन ट्रांसफार्मर के इनकमिंग साइड में कनेक्टेड रहते हैं एंड द ट्रांसफार्मर इज 11 kV बाय 400 वोल्ट। जो आपका कैसे ये ट्रांसफार्मर, इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी साइड 11 kV, सेकेंडरी साइड इज द 400 वोल्ट थ्रू ग्रैंड आइसोलेटर एंड द फ्यूजेस। इसके थ्रू कनेक्टेड रहता है आइसोलेटर एंड फ्यूजेस के थ्रू। The lightning arrestor are installed on the ST side to protect the substation from the lightning. आपका लाइटनिंग स्ट्रोक से सबस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज किया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर। जो कहाँ पे कनेक्ट रहता है? इट इज कनेक्टेड ऑन द एचटी साइड ऑफ द सबस्टेशन। द ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज टू द 400 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन आपका करेगा वोल्टेज 400 वोल्ट, 3 फेज 4 वायर सप्लाई। The output आपका कैसा रहेगा? 3 phase 4 wire. The voltage between any two line is 400 volt, whereas the voltage between any one line and the neutral is 230 volt. ठीक? The oil circuit breaker OCB installed on the LT side of the LT side automatically isolate the transformer from the consumer in the event of fault. Means at the condition of fault, the oil circuit breaker क्या करेगा? ये isolate करेगा किसको? फ्रॉम द कंज्यूमर एंड को आइसोलेट करेगा फ्रॉम द 11 kV साइड, ठीक है। द पोल माउंटेड सबस्टेशन आर जनरली यूज फॉर द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी अप टू 200 kV या 250 kV तक का ट्रांसफार्मर जो आपका पोल माउंटेड सबस्टेशन में इंस्टॉल किया जाए। द फॉलोइंग पॉइंट मे बी नोटेड for the pole mounted substation. First is there should be periodically checkup of dielectric strength of the oil in the transformer and oil circuit. So oil is used in the transformer as well as in the oil circuit breaker. So time to time we check up the dielectric strength of the transformer. If the dielectric strength is deteriorated, at that time we can remove the old oil and upload the new fresh oil. Second, in case of the repair of the transformer or oil circuit breaker, both gang isolator and the oil circuit breaker should be shut off. मीन्स जब भी आपको ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए मेंटेनेंस में निकालना है ट्रांसफार्मर को या ऑयल सर्किट ब्रेकर को, एट दैट टाइम क्या करेंगे आप? ये आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर को आप पहले सबसे पहले ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप उसको ट्रांसफार्मर को या ऑयल सर्किट ब्रेकर को आपको मेंटेनेंस पर्पज के लिए यूज करना है। नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड सबस्टेशन। अंडरग्राउंड सबस्टेशन, दिस इज द पिक्चर ऑफ द अंडरग्राउंड सबस्टेशन। means this substation used underground, ठीक है। so this is the level of ground, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है और यहाँ से ग्राउंड के अंडर में आपका ये सबस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है। सबस्टेशन में क्या रहता है? मेन पार्ट इट इज द ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर। स्विच गियर में क्या आपका रहता है? स्विचेस रहते हैं, सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, ठीक है। so from this entrance any one person we can go inside this substation and check whether the connection is okay or not. So this is the construction or picture of the underground substation. In underground substation, in thickly populated area, the space available for the equipment and the building is limited and the cost of land is high. Thickly populated area means जैसे सब अर्बन एरिया जैसे है मुंबई, पुणे, जहाँ पे लैंड का कॉस्ट आपका इट्स वेरी हाई एंड जो स्पेस रिक्वायर है, क्योंकि नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज देयर, सो स्पेस आपको मिलना मुश्किल है और लैंड की कॉस्ट आपकी वेरी हाई है। एट दैट एरिया वी कैन यूज द अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ठीक है। So underground substation in the thickly populated area where space available for the equipment and the building is limited and the cost of land is very high. Under such situation, the substation is erected underground. तो ये जो underground substation है,
ये कहाँ पे यूज हुआ? जहाँ पे आपको स्पेस मिलना मुश्किल है और जो कॉस्ट ऑफ लैंड इज वेरी हाई. In such substation, the equipment is placed underground. The design of underground substation require more careful consideration than other type of substation. Care क्यों लेनी पड़ती है? Because it is installed in the underground. The space between the equipment is very less, so we can take the care of whether the short circuit chances of short circuit of is there or not. Okay. शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम है या ज़्यादा है, उसको आपको चेक करना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट द ऑल द insulation material will be burst. So we can use this substation underground and care we can take it. So while laying out the underground substation, the following point must be kept in the mind. जब आप अंडरग्राउंड सबस्टेशन को इंस्टॉल करते हैं दैट टाइम द फ्यू पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड. फर्स्ट इज द साइज ऑफ द स्टेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. साइज कैसा रहना चाहिए? इट इज मिनिमम. सेकंड, देयर शुड बी रीजनेबल एक्सेस फॉर द बोथ इक्विपमेंट एंड पर्सन. पर्सन को और इक्विपमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको जगह होनी चाहिए. ठीक है. देयर शुड बी रीजनेबल एक्सेस. आप वहाँ पे ऑपरेट कर सके उसकी तो भी आपको वहाँ पे स्पेस आपके अवेलेबल होने चाहिए. थर्ड, देयर शुड बी द प्रोविजन फॉर इमरजेंसी लाइटिंग एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर. मीन्स फायर प्रोटेक्शन आपको देना वहाँ पे. सपोज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, सपोज some fire is occur at that time, you have to protect that fire from the fire extinguisher. ठीक है. And at the night hour where the dark is there, so at that time lighting is must be provided, emergency lighting. नेक्स्ट इज द फोर्थ, देयर शुड बी द गुड वेंटिलेशन. मीन्स जब आपका हीट जनरेट हो जाता है दैट टाइम और ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट द सम गैसेस इज बी जनरेटेड. तो उस गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, ये गैसेस से एटमॉस्फेयर में जाने के लिए आपको स्पेस या आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ द रिमोट इंडिकेशन ऑफ द एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर, so that the high voltage supply can be disconnected. Means जब आप ये सबस्टेशन को अंडरग्राउंड में इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपको क्या करना है, जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो टेम्परेचर राइज को मॉनिटर करने के लिए आपके सबस्टेशन से फॉर एंड आपके जो दूसरा एंड है वहां से आप कंटिन्यू टेम्परेचर को वॉच कर सके. इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई एट दैट टाइम वी कैन डिस्कनेक्ट द हाई वोल्टेज सप्लाई. ठीक. नेक्स्ट, द ट्रांसफार्मर एंड स्विचेस एंड फ्यूजेस. The transformer switches and fuses should be air cooled to avoid the bringing oil into the premise. Means air cool means जो आपका स्पेस है, ये जो ट्रांसफार्मर का स्पेस है यहाँ पे क्या है, आपकी एयर है. ठीक है. ड्यू टू वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर द हाई वोल्टेज साइड एंड द लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी हीट अप and due to heat up we can increase the temperature of the oil. Means जब आपका heat up हो जाता है तो temperature of oil का increase हो जाता है. When the temperature of the oil is increases at that time the oil go outside the transformer because due to heating the heat expand, means the oil expand and go outside the transformer. So we can cool that transformer by air cool. Generally जो आपका air रहता है उससे आपका transformer cooling purpose होना चाहिए. ठीक. So this is the difference between the indoor type substation and the outdoor type substation. So outdoor type substation and the indoor type substation we can see. So first the outdoor type substation, the space required is more, but in the indoor type substation the less space is required. ठीक है. This is the difference. Second difference is less time is required for the erection. मीन्स जो आउटडोर टाइप सबस्टेशन है उसको आपको इजीली और कम टाइम में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. बट द इंडोर टाइप सबस्टेशन मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन बिकॉज आपको अंडर ग्राउंड एरिया पे डिग करना पड़ता है और उसको जो इक्विपमेंट है पर्टिकुलर स्पेस में वो इरेक्शन करना पड़ता है. सो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द इरेक्शन ऑफ द इंडोर टाइप सबस्टेशन. नेक्स्ट इज द इजी फ्यूचर एक्सटेंशन. वी कैन ये आउटडोर टाइप सबस्टेशन को आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. मीन्स आपके फ्यूचर लोड के हिसाब से अगर लोड इंक्रीज हो जाता है तो यू कैन इजीली एक्सटेंड दिस सबस्टेशन. बट इन द इंडोर टाइप सबस्टेशन
the difficult future extension. Why? Because already space is less, so we cannot extend the substation if the load is increased. जब आपका लोड बढ़ जाता है तो उसमें वहाँ पे आप उस सबस्टेशन को फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक. नेक्स्ट, fault location easier because the equipment is in full view. In outdoor substation, आपका location of the fault we can easily detect it because जो आपके जो सारे इक्विपमेंट जो आपके रहते हैं वो टोटली आउटसाइड रहते हैं, एटमॉस्फेयर में ओपन रहते हैं. वी कैन चेक द इजीली वेयर इज द फॉल्ट. बट इंडोर टाइप सबस्टेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट because the complete equipment is enclosed in the underground. Or any complete in the indoor type means construction area के अंदर में आपका रहता है. Next, the outdoor type substation, the capital cost is low. Means you can install the substation in minimum cost. But the indoor type substation, the capital cost is more. Next, in the outdoor type substation, it is difficult in operation. But in the indoor type substation, it is easy in operation. Next, in outdoor type substation, possibility of the fault escalation is less because the greater clearance can be provided. Means easily we can detect the fault and we can easily remove the fault. So fault escalation is the less. But in the indoor type substation, possibility of the fault escalation is more. Chances both रहता fault occur. So next is the topic the selection and location of the site for the substation. जब भी आपको सबस्टेशन को इंस्टॉल करना है तो कौन सा साइट कौन से लोकेशन में आपको इंस्टॉल करना है, we can some factor will be there. Consider some factor. The following factors should be considered for making the selection of the substation. जब भी कोई substation selection करना है, we can follow this following factor. First is the type of substation, means किस type का आपका substation है. Second, availability of the suitable and sufficient load. आपका लोड कैसा है, नहीं तो आपका लोड कम है और उसके लिए आपने बड़ा सबस्टेशन डिजाइन किया तो इट इज नॉट फिजिबल. So according to your load and availability of the load, आपका फ्यूचर में कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग आपको सबस्टेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा. थर्ड, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कि उस सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी पर्टिकुलर एरिया में है कि नहीं, वहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क काम करता है कि नहीं, मोबाइल नेटवर्क काम करता है कि नहीं, मोबाइल का रेंज है कि नहीं, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है कि नहीं, वो फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, कि वो सबस्टेशन जहाँ पे इंस्टॉल है वहाँ पे एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन कैसा है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ पे सबस्टेशन को इंडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल करना है या आउटडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल करना है. दिस फैक्टर मैटर्स. ओके. नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल एम्यूनिटी टू द स्टाफ. जो सबस्टेशन में वर्किंग स्टाफ है तो उसको रहने के लिए जगह है कि नहीं, घर है कि नहीं है, उसकी जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, वो आपके इसेंशियल एम्यूनिटीज उसकी मिलती है कि नहीं जिस जगह पे सबस्टेशन है. नहीं तो सबस्टेशन फार एंड पे रहता है, वहाँ पे जो स्टाफ पर्टिकुलर ड्यूटी करता है उसको रहने की जगह नहीं रहती है और उसको मार्केट अवेलेबल नहीं रहता है. सो ये सब फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. एंड लास्ट इज द ड्रेनेज फैसिलिटी. So this factor will be matter for any selection and the location of the site for the substation. Next with the equipment used in the substation. तो कौन कौन से equipment use होते हैं substation में? So in bus bar we can use, insulator is there, switch gear is there, then load interrupter switches is there, earthing switches is there, circuit breaker is there, power transformer and fuses is there. So basically these are the equipment which are used in the substation. Then next is the instrument transformer. The instrument transformer, the potential transformer, next current transformer, then protective relay, lightning arrestor, indicating and metering instrument, batteries, and carrier current equipment control plate. So these are the equipment which are used in the substation. So equipment used in the substation, the total 15 or 16 are the equipment which are generally used in the any substation. Next point is the bus bar.
तो व्हाट इज बस बार? बस बार क्या है? An electrical busbar is defined as a conductor or a group of conductors used for collecting the electrical power from the incoming feeder and distribute them to the outgoing feeder. मीन्स क्या है कि बस बार इज एक आपका कंडक्टर है जहां पे आपका इनकमिंग फीडर भी आ रही है और आउटगोइंग फीडर भी आ रही है. मीन्स इफ यू वांट टू सी द पिक्चर ऑफ द बस बार, दिस इज द पिक्चर ऑफ द बस बार. So here the incoming bus is also incoming feeder is there and also outgoing feeder is same. So this is the bus bar. Bus bar. ठीक है. तो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है बस बार में? इट इज द रेक्टेंगुलर टाइप. The bus bar is the rectangle. The dimension of the bus bar is 40 into 5, 40 by 40 by 4 mm or 160 mm square, 40 by 5 mm or 200 mm square, 50 by 6 mm or 300 mm square, 60 square. So this is the specification of the bus bar. In any substation, this is the bus bar is installed, and in that bus bar, the number of feeder is incoming and number of feeder is outgoing. So bus bar, an electrical bus bar is defined as a conductor or a group of conductors. कैसा है? कंडक्टर है एंड ग्रुप ऑफ कंडक्टर यूज फॉर कलेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर उसमें आ भी रही है और इनकमिंग फीडर के थ्रू, और इलेक्ट्रिकल पावर जो उसकी जा भी रही है थ्रू किससे? आउटगोइंग फीडर के. In other words, it is a typical electrical junction in which the all incoming and outgoing electrical current meets. Thus, the electrical busbar collect the electrical power at one location. एक लोकेशन में सारी पावर एक कलेक्ट हो रही है थ्रू इनकमिंग बस फीडर के थ्रू एंड आउटगोइंग फीडर के थ्रू वो पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो बस बार इज a system where all incoming and outgoing feeders, lines, transformers are connected through isolator and breaker. तो ये बस बार किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? बाय लाइंस के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू, आइसोलेटर के थ्रू एंड ब्रेकर के थ्रू. ठीक. So we can go the detail in the bus bar and the different types of bus bar scheme in the next class. In your syllabus, so in your syllabus, the total 3 bus bar scheme is there. Single bus bar scheme, sectionized single bus bar scheme, main and transfer bus bar. Okay. So in the next class we go in the bus bar scheme, different types of bus bar scheme. Okay. So thank you very much for today's lecture.